guys, welcome back to our channel Let's Learn. Hope you all are doing great. Today we will discuss about the Kayakalpa award video I have posted in my channel Let's Learn. अगर आप लोग पार्ट 1 ऑफ कायाकल्प अवार्ड वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिए। और गाइस यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। अभी गैस स्टार्ट करते हैं कायाकल्प अवार्ड से एक लिस्ट के बारे में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। पहले पार्ट में हम लोग ने कवर किया था मेंटेनेंस ऑफ ओपन एरिया तक। अभी हम लोग बात करने वाले हैं। The next point is hospital or facility appearance. That means of your health and wellness center appearance. Here, assessor will observe your health and wellness center building. They will notice the condition of walls of health and wellness center. Guys, health and wellness center का जो wall है well plastered and no slip of building is painted with yellow color walls and brown color window होना चाहिए. And if you have aluminum window then it will be okay, but grill should be in brown color. Guys, assessor will observe your health and wellness center nameplate. Yes, nameplate is also essential for your health and wellness center, not for your Kayakalpa assessment, but it is essential for your signification of your health and wellness center. CSOs, if you did not make your own health and wellness center signboard or nameplate and also citizen charter or your health and wellness center in local language, please make it. It is essential. Okay. Guys, assessor will observe your branding of health and wellness center. Guys, branding is very important for all health and wellness center. That should be according to current guidelines. The another important things the assessor will observe, that is NSM logo and आयुष्मान भारत. गाइस, अगर आप लोग पेंट नहीं किया है आयुष्मान भारत और NSM का लोगो, प्लीज़ पेंट करवा लीजिए। आप लोग का जो फॉन्ट वाले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का वहाँ पे ही पेंट करवा लीजिए। Next point is infrastructure maintenance. Here the assessor will observe your infrastructure of health and wellness center. They will check proper boundary wall, fencing of adequate of height without breach, and also they will check maintenance of health and wellness center floor, wall and functional gate of entrance. गाइस, बीच में ही एक बात करना चाहती हूँ। मेरा पेज है फेसबुक का जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के नाम पे है, वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर मेरा पेज फॉलो कर लीजिए। और अगर मुझे डीएम करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है। आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का वो मुझे पूछ सकती है। गाइस, चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इल्यूमिनेशन। हियर दे विल चेक फॉर एडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट ऑफ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ योर सेंटर. Guys, you have to use LED or CFL bulb only at your center. Guys, next point is maintenance of furniture and fixture. Here guys, mainly they will check condition or maintenance of your center furniture like doors, windows, chairs, examination table, almirah, etc. And guys, all the furniture as well as door and window are need to be clean and functional. For this point, you can maintain register as furniture and fixture register. If you want to know about furniture and fixture register, let me know in comment section. अगला पॉइंट है रिमूवल ऑफ जंग मटेरियल. जंग मटेरियल such as broken chair, लकड़ी etc. should not throw here and there. Maintain proper junk material removal system with support of your PHC or mini PHC. There you can maintain a register as a junk material removal register. The next one is water conservation. Water conservation में assessor लोग देखेगा कि आप लोग का सेंटर में 24 आवर्स रनिंग वाटर अवेलेबल है कि नहीं. They will check for leaking of taps, pipes, overflowing tanks and dysfunctional curtains. अगर आप लोग के पास ओवरहेड टैंक है तो वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए. वो लोग कवर हटा के देखेगा आप लोग का वाटर क्लीन है कि नहीं. और उसके बाद चेक इफ द फैसिलिटी हैज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम. अगर आप लोग के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है तो आप लोग को 1 पॉइंट ज़्यादा मिलेगा. इसलिए आप लोग अगर नहीं है तो बनवा लीजिए.
अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क प्लेस मैनेजमेंट। हियर द असेसर विल असेस योर असेसमेंट मेजर्स, एसआई और ऑब्जर्वेशन, स्टाफ इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे आप लोग को पूछेगा हाउ फ्रीक्वेंटली दे सॉर्ट एंड रिमूवल अननेसेसरी आर्टिकल फ्रॉम देयर वर्क प्लेस, चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ अननेसेसरी आर्टिकल्स। यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग एक पोस्टर वर्क प्लेस मैनेजमेंट के लिए 5S जो है वो आप लोग पेश कर सकते हैं, आप लोग का जो वर्क प्लेस है वहाँ पे। और यहाँ पे ये लोग चेक करेगा इफ ड्रग्स इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स आर नॉट लाइंग इन haphazard मैनर एंड केप्ट नियर द पॉइंट ऑफ यूज इन सिस्टमिक मैनर। गैस आप लोग एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे 5S के नाम के आप लोग एक रिकॉर्ड रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये रजिस्टर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं शेयर कर दूंगी। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।